Hello. Good evening. So here again we came. I think everything is audible, visible. I'm audible, visible. No issues from my side. Camera problem. Okay, let's do it. Hello. Unmute ହେଇଯାଇଛି. Visible ଅଛି. I'm everything. Now visible, audible, visible. 2. Test. Testing. Clear now. Yes. We can start. Anyways, let me do the rituals first. देखिदियो ritual order देखिदबा. What is this? हमरो अधिकारी batches started. ठीक अछि. So on Monday, Wednesday and Friday, please ensure that you watch all the polity classes of madam.
I mean those who can't afford the माने ये afford करि परिबेनी paid batch, so हमें जहाँ भी free रे दउछु you can watch it. तापरे Tuesday and what this Monday all the week me and Deva sir will come alternatively. aji hela I think aji Thursday na, yeah aji Thursday अछि, so mobile टेट पड़छि DNA right. तापरे साइंस एंड इकोनॉमिक्स है ना. आ गोटे कथा जून मास एग्जाम हम हला, डोंट थिंक दैट जून मास किसी एग्जाम न हो पारे, जून मास एग्जाम हम ठीक अच्छे. तो से हिसाब रे स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आ जहाँ भी डीएनए रे दउची राइट, जहाँ भी मु डीएनए रे दउची दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. कहीं क्वेश्चंस दउ ता भीतर एमजे नै कि खाली मेंस पर्सपेक्टिव रे किछि कहि दउची. आई एम गिविंग क्वेश्चंस, फुल ऑफ क्वेश्चंस, so please do it. I hope क्वेश्चन तो भल लागु था करिया पे. So this is the Adhikari batch I am talking about. You can enroll. This is 6,000 only, and 6 plus 5 kete achi, you know, and that is Adhikari Pro Max, that is pre and mains. ठीक है. And this is my PSR batch. If you want, you can join. Use code SRG10, right? Not SRK, it is SRG. Okay. Anyways, let us start the discussion from the first one. कौन है कि राजस्थान देखो फटाफट कर दवा. कौन है राजस्थान scraps two-child norm for local body panchayat polls after 3 decades, right? समान 1996 रु देखो लोकल जो लोकल बॉडी अच्छी जोड़ा पंचायत अच्छी एंड म्युनिसिपालिटी है दैट इज ऑलवेज अंडर द पर्व्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट. एंड ताकू किए इलेक्शंस कर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तांको हाथ था. ता भीतर सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर किसी हाथ नଥାଏ. जो पंचायत हेगला म्युनिसिपालिटी हेगला दैट इज ऑलवेज अंडर द पर्व्यू ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन्स. ओके. एठी कोन हेछि राजस्थान स्क्रैप्स द टू चाइल्ड पॉलिसी, राइट. गोटे जिंस जे हम जानचो पंचायत को लड़ीबा को हेले केते 21 इयर्स दरकार है ना. दैट इज ऑलरेडी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट हाँ जदि रूल्स जदि फ्रेम करिया पे ना स्टेट को पूरा ऑटोनॉमी दिया जाय है ना. स्टेट को पूरा ऑटोनॉमी दिया जाय. जेमती राजस्थान रूल आंतला 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म आंतला बुझि पार. जहाँ पाखरे दीटा रो अधिक चाइल्ड थबो. गुड इवनिंग. जहाँ पाखरे दीटा पुणी होची कैमरा right now glitch. Good evening. No glitch effect, right? Fine. Audible, visible, yeah, right. है ना. तो राजस्थान गवर्नमेंट कौन करतला दे एक्चुअली ड्यू टू द फर्टिलिटी रेट सेतल फर्टिलिटी रेट अराउंड 3.6 थिला हला. तो सेते में से कौन करतला जे पंचायत इलेक्शन लड़िया को हेले ताको दे हैव टू अडर द नॉर्म्स ऑफ 2 चाइल्ड है ना. से टाइम रे 2 चाइल्ड पॉलिसी आनथिले. आई मीन जे ग्राम सभा इलेक्शन लड़िबो जे पंचायत हबो समस्त में 2 चाइल्ड थिला. एबे कौन करछंती जेतल फर्टिलिटी रेट डाउन टू 2 हे जाईची as per the recent NHFS survey. एबे से मन कौन कहछंती नाउ आई मीन ए जो रूल्स टा नॉर्म्स कर देते. नाउ यू कैन हैव 2 या 3 प्लस किड्स 4 प्लस किड्स एंड ऑल दैट, राइट. आ गोटे कथा लगी एवन आसाम है ना. एटा भी तमरा गोटे फिल्म फैक्टर टा काई आसाम भी एबे रिसेंटली कौन करतला 2 चाइल्ड पॉलिसी थिला. तांकर भी थिला 2 चाइल्ड पॉलिसी. ओके. तो आसाम कौन होतले आसाम भी 2 चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए, राइट. बट प्रॉब्लम है नाउ दे हैव रिलैक्स्ड टू SC ST and some Moran community है SC ST Moran community they can go for 3 plus child, right. बाकी जो जनरल रही गले तांको पे 2 plus child होची. आसाम रे भी माने पंचायती रूल्स रो एमती हेच रिसेंटली अमेंडमेंट हेची. दोज और SC ST and Moran community तांको पे 3 child हेले भी चलिबो.
because we need more child from them kaingi no government skill obviously एडा भी होबा कथा पुणी glitch होचे I know still I am refreshing once again ठीक अछि I know glitch हला भल लागे but still I will refresh ठीक अछि in Assam so Assam CM is doing good thing ना आ गोटे कथा लागी गोटे जिंस हला ना तो एक्चुअली तुम जानि पारनो गोटे जिंस मु जानि नी आ कोछ ना एबा हमें हार्डली 1.4 बिलियन नु हो we are down to 1.2 बिलियन तुम जब एसआईआर देखो ना एसआईआर रिपोर्ट देखो ना ता भितरे यूपी रे अराउंड 1 करोड़ बेंगल रे अराउंड 1 करोड़ डिलीशंस हबो 1 करोड़ डिलीशंस हबो पुणी गिली चला पुणी ओके ठीक अछि तो एसआईआर जो रिपोर्ट बाहर छी okay if I'm not visible then please you can tell me okay if the camera problem होउची then please tell me in the comment section नले मु जानि परिबेनी बेंगल रे तो बेसी होबा कथा 90 लाख कोन से माने मोर देन 1 करोड़ होबा कथा सेठी बुझि पाछो तो स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग द एसआईआर देन दैट इज द बिग प्रॉब्लम देयर बुझि पाछो जदि स्टेट गवर्नमेंट जदि सपोर्ट कर आसाम बळे जस्ट ए ग्लिच होउची देन क्लियर अगेन हां सेटा मु रिफ्रेश करछि ना सेति भाई just wait a minute गोटे मिनिट मु आछि राइट इज इट ऑडिबल ना but ठीक अछि तो हां is it audible सेटा मु पचारछि okay anyways okay I hope I will disturbances hobani right ठीक अछि where I have been हां so let me go to the first slide here देखो एटा देखो तो एबे कोन हेची two bills will be introduced in the assembly ongoing budget session to amend the rule and state parliamentary affairs set तो गोटे जिंस हमर कोन जानियार अछि देखो गोटे जिंस लागि it is of 21 years age हला ता भितर आसाम गवर्नमेंट एंड I mean the पंचायत है ना पंचायत तमाने this under the purview of state है ना हमें जानि छु कोन गोटे कोडा थिला I mean 73rd constitution amendment act ये कोन थिला 9th schedule right 9th schedule आनथिला and it has 18 subjects है ना two articles from 243 to 243 please remember ठीक अछि तापरे 74th
74 and कौन थला 9A आनथला and this is sorry this is 29 subject and this is 18 subject ठीक अछि तुमको एति रिमेंबर करिवार अछि हला ओके तुमको एति रिमेंबर करे 28 and 18 subjects राइट तापर आ गोटे जिंस हला कि आ गोटे जिंस कोन अछि हमरो पंचायत जो पंचायत मेंबर्स अछंती they are elected for 5 years है ना they are elected for 5 years suppose किछि मेंबर 2025 रे जदि इलेक्टेड हेछि they will continue till 230 है ना पांच आई मीन जे माने जे ग्राम सभा रे जो मेंबर्स अछंती बुझी पाछो 11 शेड्यूल जे ग्राम सभा रे मेंबर्स अछंती आई नो पुनी प्रॉब्लम होछि पुनी होछि कि प्रॉब्लम ठीक अछि सपोज ओके दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years सपोज जो ग्राम प्रधान अछि आई मीन डाइड है ना सपोज 2025 रे इलेक्शन हैला and he continued to 2027 and he died तापर कोन हबो तापर कोन या प्रावधान अछि कि 6 months भितरे चुनावटा होबार अछि बुझी पाछो and he will be there for the remaining term you know problem होछि okay remaining terms he will be there for the remaining terms okay तो ए जिनसटा मते कहबार थिला गोटे जिनस देखो ahead of the civic polls Rajasthan state cabinet on Wednesday approved the removal of 3-decade old है ना the restriction was introduced in 1995 during the government led by the former chief minister Bhairav Singh Shekhawat okay आ गोटे जिनस अछि कि हमर पैसा एक्ट राइट पैसा केबे आस्तला है ना पैसा एक्ट केबे आस्तला तापर मु कहू इज इट इंप्लीमेंटेड इन फुल स्केल बुझी पाछो इज इट इंप्लीमेंटेड इन फुल स्केल आ पैसा एक्ट कोड इंप्लीमेंट होची से जिनस भी मु पचारछि राइट so if you know what about the PESA act is very important कहीं हमर ओडिसा रे भी कोन हेतला स्ट्राइक हेतला मझिरे 2024 25 रे स्ट्राइक हेतला 1997 रे एटा लागू होबे कहउथिले ओडिसा रे लागू होबे कहउथिले जेमि झारखंड रे लागू हो जाय छै किंतु ओडिसा रे लागू होबे कहउथिले किंतु 2023 24 रे कोन ड्राफ्ट आस्तला हैला पेसा रो ड्राफ्ट आस्तला देखो गोटे जिंस जदि लागू होबा खले ना तापे यू हैव टू फ्रेम रूल्स है ना यू हैव टू फ्रेम रूल्स बुझी पारछ ताको रूल्स फ्रेम करिया पड़े बट प्रॉब्लम हैला कि रूल्स फ्रेम है नितु जगह पूरा रूल्स फ्रेम है नी ड्राफ्ट भी फ्रेम है नी तो दैट इज द बिग हिंड्रेंस टुवर्ड्स द पैसा जदि पैसा आसी जीवो ना ग्राम सभा अछंती ना ग्राम सभा उपरे माने तांगर पावर बहुत बढ़ी जीवो बिकॉज़ जदि किछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स आसीबो चाहिबो even though if you want a mining you have to consult this gram sabha body सेमानकर हां या ना हेले जाई करी तमे प्रोजेक्ट आनी परिबो बुझी पारो एठी हला कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस माने एमाने जदि कंकरेंस एमाने जदि हां कहबे देन यू कैन गो फॉर इट अदरवाइज इट वोंट हैपन ए जिनसडा से कोच हला पैसा एक्ट भी आर खासियत अछि बट पैसा एक्ट इज नॉट एट ऑल फुल्ली इंप्लीमेंटेड है ना झारखंड इंप्लीमेंट हे बट ओडिसा रे हे राइट एटा देखो द रेगुलर इलेक्शन एंड फिक्स्ड टेन्योर the act mandates regularly elections every 5 years this is very important this is 5 years in case of early dissolution the election must be held within 6 months so this 6 months this is very important the act established an independent state election commission SEC in each state to supervise so state election commission I think 243k rashti hai na please remember this is 243k for the state election commissioner thank you for ensuring autonomous and impartial electoral process ठीक अछि anyways so आउट कथा लकी where it got the mandate article 40 है ना DPSP article 40 DPSP it got the real mandate है ना आउट कथा लकी there is 3 tier structure कोन GP ग्राम पंचायत समिति एंड जिला परिषद आई मीन एटा थिला कि 3 tier structure थिला या देखो गोटे जिंस लकी हमर जो 5th शेड्यूल रे अछि 5th शेड्यूल रे 10 स्टेट्स अछि हला
10 स्टेट्स रे ओडिशा भी अच्छी, झारखंड भी अच्छी। आ गोटे जिनस है कि आ गोटे जिनस मु कोन को जानछ, जेतो तुम 10 शेड्यूल पढछ ना, ओडिशा रे को डिस्ट्रिक्ट रे प्लस को डिस्ट्रिक्ट रे को एरिया रे कोडा कोन हाँ फिफ्थ शेड्यूल लगी सॉरी या फिफ्थ शेड्यूल लगी है ना, फिफ्थ शेड्यूल लगी सेटा भी तुम पढ़ी वाला। ओडिशा रे को डिस्ट्रिक्ट रे को एरिया रे फिफ्थ शेड्यूल लगी सेटा भी तुम मन रखियो। इट इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू गूगल, तुमको सर्च करबा पड़िबो। ओडिशा ओडिशा रे जो पंचायत वाला बुक अछि सेटा सर्च करिके तुम जानिबो। ऑब्वियसली मयूरभंज थबो, माने गंजाम रे किछि किछि एरिया रे थबो, तापरे कोरापुट तो थबो ही थबो, बुझि पर होल डिस्ट्रिक्ट न होई पारे बट सम पोर्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेई पारे हला। सेठी कोन जे फिफ्थ शेड्यूल अछि काहेकि आई मीन सेठी कोन अछि ट्राइबल ऑटोनोमस बॉडी अछि हला सेठी। बट सिक्स शेड्यूल रे प्रॉब्लम कोन, सिक्स शेड्यूल रे एतल जागे पैसा लागिनी हला। सिक्स शेड्यूल रे तो पैसा लागिनी काहेकि सेठी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल अछि, जोटा कि हमर एटीएम मानी केरा आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम हला। सिक्स शेड्यूल रे सेठी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल अछि। ओके तो एटा प्लीज रिमेंबर एंड सेठी पैसा तो लागिनी। एनीवेज हम एटा देख दियो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एटा पढो, एटा ओडे यूपीएससी क्वेश्चन दा राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 साल। ए पंचायत reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. Try to do this. The following statement, the minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 साल. Then panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. So it is 21 na, it is 21 and it is B. Yeah, it is B. ठीक है। आउ गोटे जिनस दउचे एटा देखो, एटा थिला आर्टिकल 243 रे ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कोन 5 ईयर टर्म फ्रेश इलेक्शन विदिन 6 मिनिमम एज केते 21 दिट इज रिटन इन 243 एफ हला। देखो गोटे हला कि गोटे हला आर्टिकल 243 ई सेट से कोन कहछि पंचायत टर्म केते होबो बुझो। इट्स टॉक्स अबाउट द इलेक्शंस एंड पंचायत टर्म, दैट इज 43 ई हला। 43 टॉक्स अबाउट द इलेक्शंस एंड पंचायत टर्म। आउ पर्सन रे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केते हेतो दैट विल बी अंडर द एफ। ओके सो एटिके हारारी मन रखतबो एफ एंड डी, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। ठीक अछि, ए क्वेश्चन देखो, डू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पैसा 1996. इट extends पंचायत प्रोविजन टू फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, तापरे इट आल्सो अप्लाइज टू सिक्स शेड्यूल एरियाज, तापरे ग्राम सभा अंडर पैसा मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर लैंड एक्विजिशन इन ट्राइबल एरियाज। Okay, try to do this question. Consider the following statements about PESA. It extends panchayat provisions to fifth schedule areas. It also applies to sixth schedule areas. तापरे gram sabha under PESA must be consulted before land acquisition in tribal areas. I know this question is bit tough, but करिए देखो 1 and 3. Okay, it extends पंचायत provision fifth schedule area, एटा तो ठीक अछि। तापरे ग्राम सभा अंडर पैसा मस्ट बी 1 and 3 ना। So this is 1 and 3. Yeah, 1 and 3. एटा करो, एटा करो। Consider the following statement. Consider the following statement. The PESA Act 1996 was enacted under the Article 243 MA. Okay, Article 243 MB empowers state legislatures to extend Part 9 to 6 scheduled areas. No legislation has been enacted under 243 MB so far. देखो this question एटा मु काहे के देछि, even though you don't know, still you can eliminate. बुझि पारबे इन द क्वेश्चन सब कोन एलिमिनेशन रे खेलो राइट, एटा पूरे प्योर एलिमिनेशन रे खेलो। Consider the following statement. PESA Act 1996 was enacted under 243 MA. Then MB empowers state legislature to extend Part 9 to the 6 scheduled areas. No legislation has been enacted under 243 MB so far. एटा सब कोन, what is this? This is all the tricks है ना। तुम जदी concept ठीक से जानि तबो, if you have studied polity well,
तुमको माने even though you don't know the articles then you still can do that है ना. all you think, right? Still टिके भाभी दियो कौन है पर बुझी पारजो. Still think. At least I need one more answers. I know टिके मझे glitch है जायची. People have left, but still those who are joined here, once again I welcome you all. But still you do this question है ना. एटा मु निजे बने आज एटा मु निजे बने एई क्वेश्चन मु निजे बने. I love framing questions like this. देखो आइदर गोटे कैच अछि. You need only one catch. Then तमे आर आंसर करि परिबो. देखो गोटे जिनस हला कि पैसा एक्ट 96 was enacted under article 243M for a doesn't matter if you know or not, doesn't matter. ठीक होची. But एटा देखो article 243M भी empowers state legislatures to extend part 9 to scheduled areas. This is the catch here. बुझी पाछो. I mean it empowers the state legislatures. Yeah, it empowers the parliament. पैसा एक्ट जदि लागिवो ना, इट देखो 6 शेड्यूल रे जदि पैसा लागिवो ना, इट विल ऑलवेज काहे कि 6 शेड्यूल टा ठीक हो ना. देखो 8 लिखा है जी कोन 6 शेड्यूल 6th शेड्यूल टा कोन एटीएम मनी कोन आसाम त्रिपुरा मेघालय एंड मिजोरम सेठी कोन शेड्यूल ट्राइब्स सेठी कोन थिला हमरो कोन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अछि ना. डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल अछि. डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल अछि. सेठी कोन थाए सेठी ट्राइबल बॉडीज बनांदी. इंडिया रे जहां भी कानून थबो इंडियन रो जहां भी लॉ थबो ना, इट हैज टू पास फ्रॉम द डीएसी. बुझी पारछो. ता पर जाएंगे से कोन 6 शेड्यूल रे लागू हबो. बट मु ए जिनसटा कहूची जदी माने एटा कोन दिस इज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशन ऑफ पैसा टुवर्ड्स 6 शेड्यूल हैला. एक्सटेंशन ऑफ पैसा टुवर्ड्स 6 शेड्यूल. तो ता पे कोन यू नीड माने पैसा को एक्ट करबा को ले यू नीड द कोन पार्लियामेंट्री अप्रूवल दरकार. एट स्टेट लेजिस्लेचर किछि कर परिबो. एटा डायरेक्ट आछि आर्टिकल रो आछि. बुझी पारछो. तो यू नीड पार्लियामेंट अप्रूवल. जदि तुम पार्लियामेंट अप्रूवल दे दो देन यू कैन मेक लॉस. स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक लॉस. तुम केमिति इंप्लीमेंट करिवो. बुझी पारछो. तो टू तो सेमिति भी गलत थिला ना. ऑल ऑफ द एबव पळेला. बुझी पारछो. एंड बुझी पारछो. तापरे नो लेजिस्लेशन हैज बीन एनेक्टेड अंडर 243MB. यस 6 शेड्यूल रे पैसा आसीनी. 6 शेड्यूल रे तो जाके पैसा आसीनी. एट देखि दियो. देखो एटा देखो पैसा एक्ट 96 was enacted under article 343MA, right? तापरे स्टेट लेजिस्लेचर कैन एक्सटेंड. नो इट इज पार्लियामेंट. ठीक अछि. पार्लियामेंट आगे पकेबो कोडी 243MB रे. देखो 243M ए हैला फॉर व्हाट 5th शेड्यूल एरियाज और बी हैला 6 शेड्यूल एरियाज. अप्रूवल के देबो पार्लियामेंट अप्रूवल देबो. ओके. So this is how we have to eliminate हैला. So no legislation enacted under 243MB so far. So power exists but existence of a question is not exercised. ठीक अछि. तो एटा जस्ट गोटे क्वेश्चन दिला. गोटे जिनस हला जेतल तमे पंचायत पर लिखिबो ना यू कैन राइट 2 points यू हैव टू राइट इन द मेन आंसर. गोटे लगे महात्मा गांधी कहउतले कि पंचायत इज द ग्राम स्वराज एरिया जोटे कि विलेज सेल्फ गवर्नेंस पे कहउतले है ना. महात्मा गांधी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द सेल्फ गवर्नेंस इन द विलेज एरियाज जोटा कि पंचायत को से सेल्फ ऑटोनॉमी देवा कथा कहते है ना. जदि आमे विलेज एरिया से सेल्फ ऑटोनॉमी देबो देन आवर कंट्री विल बी प्रॉस्परस. एटा महात्मा गांधी कहते. किंतु अंबेडकर कोन कहथिले जो हमर जो विलेज एरियास ना ताको कहते डेन ऑफ इग्नोरेंस कहते. ए पॉइंट लिखिया कथा डेन ऑफ इग्नोरेंस. दिस इज द डिबेट बिटवीन महात्मा गांधी एंड कोन अंबेडकर साहब. बुझी पारछो. द विलेज या डीपीएसपी ताको विलेज को डेन ऑफ इग्नोरेंस काहे कि सेठी कास्टिज्म बहुत थाए सेठी छुआछूत बेसी थाए. सेति पई तमे जदी विलेज को ऑटोनॉमी बेसी दे देबो ना हमर कास्टिज्म आउरी बढ़ी जिवो. बुझी पार. सेति पई अंबेडकर वाज अगेंस्ट दिस ग्राम स्वराज. बुझी पारछो. ही वाज नेवर अगेंस्ट द ग्राम स्वराज. काहे दैट इज कॉल्ड डेन ऑफ इग्नोरेंस. गुफा सेटा इग्नोरेंस और गुफा. बुझी पारछो. तो एटा देखो व्हाट वाज महात्मा गांधी व्यू ऑन द विलेज पंचायत
provincial government should fulfill should fulfill the fully control panchayats. Panchayat should be controlled centrally. Panchayat should be kept free from the elections. Panchayat should be village republics. It is easy. It should be village republic. Kahinki ame elect karibu, right? We will elect the members of the panchayats. Seta Mahatma Gandhi कहउतले. We will elect the members of the panchayat. ठीक अछि. Anyways, we will move on to the next topic, right? I know ठीक है time waste हो जाए, but I want I hope बेसी time waste होबनी हो, right? Actually I don't like this. मतलब पढ़ेला बेलू किसी प्रॉब्लम है ना, कौन से फ्लोट है भांगी जाए रिपल्स आसे है ना. तो एटा गोटे प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रे एटा मानिचे है ना. कौन यूरेशियन डाइविंग डक्स प्रेजेंस इन काजीरंगा नेशनल पार्क ट्रिगर्स क्लाइमेट चेंज कंसर्न. ठीक अछि. तापरे ओके एटा कोन दे यूरेशियन डाइविंग डक्स प्रेजेंट. देखो गोटे जिंस लागी ए जो डक अछि है ना, दिस डक, the duck rock first presence after many years. I mean the first presence, right? The first presence in many years. कही पारी जो डाइविंग डक अछि ना, डाइविंग डक ना, हार्डली वी हैव स्पॉटेड वन डाइविंग डक इन काजीरंगा. एटा केबे आसेनी, ए डाइविंग डक ता केबे आसेनी, किंतु काजीरंगा रे हम फर्स्ट टाइम स्पॉट करिछु. बुझि पाछो. तुम यदि पढि देले तुम जानिबो. एटी देखो असम रे रेयर म्यू मेक्स हिस्टोरिक डेब्ट kept in काजीरंगा नेशनल पार्क. बुझि पाछो. एक रेयर म्यू हला, प्लीज रिमेंबर, rare mew makes historic depth in Kaziranga National Park. The Kaziranga recorded as rare mew sighting for the first time. The overall water bird count was this much from 100 species. Only one mew was documented during the census. So this is the very important news. Once rare mew. देखो एटा देखो जो डाइविंग डक जोड़ा हुए ना, से कौन करी बांचो से भीतर पसिकरी इट विल हंट डाउन इट्स कौन फिशेस. तार खासियत है डाइविंग डक माने भीतर पसि जीवो एंड इट विल ईट ऑल द फिशेस. सेडा ला ये डाइविंग डक फ्रॉम द यूरेशियन टाइगर ब्रीडिंग ग्राउंड. माने इट केम्स फ्रॉम द टाइगर ब्रीडिंग ग्राउंड. माने बुझी परछो पूरा जोडी स्नोफॉल हुए, जोडी कॉनिफरस फॉरेस्ट थाए से सेठू आसेची. काहेकि जदि सेठू आस्टी माने बहुत विंटर चलथिला, रशिया रे बहुत विंटर चलथिला. ये समर वेकेशन पे इंडिया आसी काजीरंगा राष्ट्र है ना. ताको कोन दिस मेरगुलस एल्बेलस सिग्नल्स वेटलैंड हेल्थ इन इंडिया. माने इट शोज दैट हमर वेटलैंड रो कोन इंप्रूवमेंट अछि. माने काइंड ऑफ इकोसिस्टम में जदी ए डक आसो जे दैट मीन्स दैट हम वेटलैंड पे हेल्दी अछि. एटा तुम कहि परिबो. तो ए जिंसडा अछि देखो द डाइविंग डक फेवर्स फिश रिच शेल्टर्ड. एटा तुम पढि दबो. देयर इज नथिंग टू से. एंड मेन थिंग हला इट इज लीस्ट कंसर्न. दिस मेक द मेरगुलस एल्बेलस बुझी पारछो अको कोन डाइविंग डक म्यू कोनती और मेरगुलस आर्गुलस कोनती एंड दिस इज ए लीस्ट कंसर्न स्पीशीज ना. एटा गोटे प्रिलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट थिला, मते कहि परतिला. आई डिड दैट. ठीक अछि. खाली जदि एग्जाम आसीबो प्लीज रिमेंबर. बुझी पारछो. एटा देखो consider the following statement regarding the mew Mergulus albulus. It is a diving that feeds mainly by the submerging underwater. It migrates to India through the Central Asian flyway. It is classified as endangered in the IUCN red list. Easy question, na? Easy question. This migrates to India through the Central Asian flyway. It is a diving duck that feeds mainly by submerging underwater. It is classified as endangered in the IUCN red list. Least concern. Yeah, this is least concern. Please remember. Okay. So, 1-3. जल्दी कहि देबे एटा कोन अछि. देखो बैलेंसिंग फेथ एंड डिग्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ठीक अछि. बैलेंसिंग फेथ डिग्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. देखो एटी कोन कहै छै बैलेंसिंग फेथ डिग्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कथा कहै छै. देख गोटे जिंस हला कि एबे एक्चुअली कोन है देखो तुम जानतो द फेमस 2018 शबरीमला वर्डिक्ट, राइट. ता भीतर कोन थिला 4:1 थिला, राइट. 4 शबरीमला वर्डिक्ट रे कोन थिला 4:1 थिला. काहेकि 4 judges told that women should be allowed in the temple and one dissenting judge told that no, it is their faith
इट शुड नॉट बी अलाउड है ना से इंदु मल्होत्रा थिले राइट मु तुम केस हारारी कहि दउची या 2 and 3 आंसर बी इट इज क्लासिफाइड एज हाँ आंसर ए हम ना कोडी आंसर ए हम सॉरी सॉरी आंसर ए हम 1 and 2 दिस एंड एडा नो ना एंड एडा लिस्ट कंसर्न ना तो एडा पूरा गला आंसर ए हम ए ओके देखो शबरीमला रे कोन हितला से जिनसटा तुम जानि जाओ शबरीमला रे प्रॉब्लम थिला जो लोड आए पे जो अछन ना है ना लोड आए पे ना ही प्रैक्टिस्ड सेलिबेसी है ना जदि तुम प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी अच्छे ना तो यू वोंट बी यू आई मीन तुम वुमन पाखे तुम रहीबन सेमती है तो सेठी कौन थिला कि जो द वुमन एट द एज ग्रुप ऑफ 10 to 50 ना दे आर एक्चुअली नॉट अलाउड इन द टेम्पल नॉट अलाउड है नॉट अलाउड बट प्रॉब्लम है 2018 रे जो जजमेंट थिला ता भितर कहले शबरीमला टेम्पल रे वुमन कैन बी अलाउड बुझी पाछो जजेस रो स्प्लिट स्प्लिट तो कहबेनी एक तरफ वर्डिक्ट थिला 4:1 है ना ता भितर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थिले 4:1 वर्डिक्ट रे दे वर अलाउड राइट नाउ यस ब्रह्मचार्य ठीक अछि है ना ओके ठीक अछि तो एबे कोन हेछि तो एबे कोन हेछि एबे 5 जज बेंच थिला एबे रिसेंटली कोन 9 जज बेंच एडा आउतरे हियर करिवो ओके 9 जज बेंच विल हियर दिस केस वंस अगेन है ना शबरीमला केस गोटे जिंस अछि आ भीतर कोन कहबर अछि तुमको गोटेला डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस राइट डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कथा कहूजे ता माने हला कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड इवनिंग अरूपनंदन माराना फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू ठीक अछि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस माने कोन कहूजे ता भीतर कोर्ट विल डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल्स या कस्टम्स हेगला दैट इज एसेंशियली टू योर रिलीजन essentially to your religion as per the recent verdicts kono ban on woman hegala these are not essentially religious practices tapare mu koi pari hijab right hijab woman these are also not essential religious practices tapare excommunication है ना excommunication that to limited right देखो these are not essential religious practices कहीं ए जिनसटा देखो सी कौन कहते सपोज देयर वांट वुमन हैज टू गेट एंट्री इन द टेंपल है ना इफ वुमन हैज टू गेट एंट्री इन द टेंपल so if they are not allowed this can violate article 14 है ना right to equality then article 25 है ना right to religious freedom through 3 P's कौन profess propagate right आउट पी कौन थला तुम कहबो है ना तापरे आउट कोइ परिबे then they can move to Supreme Court if these rights are violated under Article 32 and 226 है ना तो ए जो जिनस अछि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस अछि ना DERP है ना I mean it only takes about the essentiality of the practices I mean it always talks about the 25-26 Article 25-26 है ना एटा कोन थिला एटा कोडता एटा कोन प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट बुझि पाडो सब्जेक्टेड टू पब्लिक मोरालिटी हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर एटा थिला राइट तो दिस आई मीन एंड दिस इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 25 एंड 26 इवन आर्टिकल 14 राइट गोटे जिंस अछि कि जेतो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस थिला आर्टिकल 26 भी कहे कोन रिलीजियस डिनोमिनेशन कथा कहे रिलीजियस डिनोमिनेशन से कोन हे परिबो तमे तमरो रूल्स किछि फ्रेम करि परिबो एंड इट कैन हां तमे तमरो रूल्स किछि फ्रेम करि परिबो it can be essential to your denominations religious denominations किंतु गवर्नमेंट जो कोड थिला कि शबरीमला जे जानते ना they are not a religious denomination से माने गोटे ग्रुप ही नो जहां पर जे रिलीजियस डिनोमिनेशन था ना तांको पर ग्रुप था they can frame rules किंतु शबरीमला जोड़ा थिला they are not a part of religious denominations बुझि पाछो so they can't frame तो तांको ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस माने सी जो रूल्स करछंती ना इट वोंट fall under the essential religious practices ए जिनसरा से कहतला कोड कहतला ठीक अछि देखो
2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कौन होते यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कोन वुमन एज 10 to 50 नॉट अलाउड एंट्री इनटू सबरीमाला टेंपल एटा 40:1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट थिला बैन कोन थिला आर्टिकल 14 आ कोन इक्वालिटी को वायलेट करथला आ 25 वायलेट करथला बट आ गोटे जिंस अछि रूल 3B ऑफ केरला टेंपल रूल्स डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वुमन ऑफ ऑल एजेस अलाउड एंट्री देखो गोटे जिंस अछि तुम गोटे जिंस कहबार थिला एटा देखो आम से जो सबरीमाला केस रे कोन होतला जस्टिस चंद्रचूड़ कोन करथिले he proposed an anti exclusion test जेतल तो मेंस आंसर राइटिंग लिखिबो ना you have to write all these things anti exclusion test कोन anti exclusion test हैला doctrine of essential religious practices आकु माने आर काउंटर की असला anti exclusion test in his formulation these norms would allow for due difference to shown to the religious group to determine for themselves what doctrines and